हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज हम देखेंगे वेब डेवलपमेंट के बारे में। कैसे वेब डेवलपमेंट सीखना होता है, कैसे फुल स्टैक डेवलपर बनना होता है, या व्हाट्स अ फ्रंट एंड डेवलपमेंट, या जो भी बैक एंड डेवलपमेंट कैसे करते हैं, वो आज हम इस वीडियो से क्लियर कर लेंगे कि क्या क्या चीज़ पढ़नी होती है वेब डेवलपमेंट की जर्नी के अंदर। अभी हम देखेंगे फ्रंट एंड के साइड। हमें पता है फ्रंट एंड को हम लोग क्लाइंट साइड भी बोलते हैं और बैक एंड को हम बोलते हैं सर्वर साइड। फ्रंट एंड के अंदर बेसिकली जो भी फ्रंट एंड इन द सेंस व्हाटएवर द बेसिक वेबसाइट है, जो भी अभी वेबसाइट है उस चीज़ के अंदर कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, कैसी स्टाइल होनी चाहिए, कैसी फंक्शनैलिटीज होनी चाहिए, चीज़ ना फ्रंट एंड के अंदर देखता है। ये तीन चीज़ कैसे डिटरमाइन करोगे? एक तो है HTML मतलब स्ट्रक्चर, और कैसे दिखना चाहिए वो करता है CSS, और उसकी फंक्शनैलिटीज़ जो भी होती हैं वो देखा जाता है जावास्क्रिप्ट से। हम देखेंगे इस बेसिक लैंग्वेजेस के अंदर जब भी तुम फ्रंट एंड डेवलपमेंट करते हो। Basic languages of front end development is HTML, CSS and JavaScript, and you can see all these three languages comes under the front end development, जहाँ पे तुम basic एक website बना सकते हो with functionalities, मतलब एक responsive website बना सकते हैं इन तीनों चीज़ों से। अभी HTML, CSS and JavaScript तुम फ्रॉम स्क्रैच हर चीज़ हर बार लिख तो नहीं सकते, यानी you can't write again and again the code from the beginning, so we use for this frameworks. frameworks एक एप्लीकेशन की तरह होता है जहाँ पे हम लोग मतलब you don't need to write the code from the scratch, it's already been written, जैसे HTML, CSS and JavaScript है। ये सिर्फ बेसिक वेबसाइट बनाने के लिए, जैसे हमें कॉम्प्लेक्स वेबसाइट्स बनाने हैं तो यू कांट अगेन राइट द कोड फ्रॉम द बिगिनिंग। उस टाइम पे हमारे यूजेज होता है फ्रेमवर्क्स। फ्रेमवर्क्स बहुत सारे फ्रेमवर्क्स होते हैं जैसे एंगुलर, व्यू और रिएक्ट। ये सारे फ्रेमवर्क्स और बहुत सारे फ्रेमवर्क्स होते हैं जो यूज़फुल होते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए, और बहुत सारे फ्रेमवर्क्स होते हैं जिससे हम लोग फ्रंट एंड की जो भी कॉम्प्लेक्स वेबसाइट्स होते हैं वो ईजिली बना सकते हैं इन फ्रेमवर्क्स को यूज़ करके। ये हो गया फ्रंट एंड साइड्स के अंदर बेसिकली HTML से स्टार्ट करो। CSS तो कैसे फॉन्ट होना चाहिए, क्या स्टाइल होनी चाहिए, क्या कलर होनी चाहिए, कैसा बैकग्राउंड होना चाहिए, ये सारे चीज़ हम लोग CSS से देखेंगे। और जो भी सपोज आई हैव अ बटन इन माय वेबसाइट, अब इस बटन को क्लिक करने से व्हाट फंक्शन इट शुड परफॉर्म इज बीन गिवन बाय द जावास्क्रिप्ट। अब ये तीन चीज़ हैं जो हम लोग सीख के फिर फ्रेमवर्क्स के पास जाके फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हैं। नाउ लेट्स कम बैक टू द बैक एंड डेवलपमेंट साइड। इस चीज़ को हम एक एग्जांपल लेके समझेंगे। सपोज एक यूज़र है जिसको कोई प्रोडक्ट खरीदना है एक अमेज़ॉन की वेबसाइट से। सो व्हाट द यूज़र विल डू, द यूज़र फर्स्ट विल रजिस्टर using their email ID and password, then logins to the website and then can buy the products. When the user buys few of them, the user can add it to a cart or can delete it from the cart or add it to an ordered list or delete it from the order list. Whatever the logical operations, whatever the CRUD operations, create, read, update, delete, these are the operations that the backend developer takes off by writing the logical code, so that whatever the user performs, the action should be updated in the databases. And these all are the things that the backend developer do by writing a logical code. Now let's see a few of the frameworks of the backend development. जैसे हम लोगों ने देखा कि फ्रंट एंड में एंगुलर, व्यू, रिएक्ट, ये बहुत सारे फ्रेमवर्क्स होते हैं जो फ्रंट एंड के लिए यूज़ होते हैं। नाउ व्हेन वी कम बैक टू द बैक एंड साइड और द सर्वर साइड, वी हैव Django, वी हैव Node.js. For doing Django framework, for learning the Django framework, you need to know basics of Python language, concepts of OOPs, what are objects, what are methods, what are the special methods. There are special methods in Python like in init method,
str method. These all are the basic things while you write the code in Django. Like you need to have the basic knowledge of the Python to write Django, and the corresponding database that Django uses is SQLite 3. Now, if we come back to another framework of Node.js, this Node.js is for using these framework. You need to know the basics of JavaScript language, and corresponding to it, you can have the MongoDB as a database. So this is the complete basic structure of the backend side, जहाँ पे एक framework होता है जिसके अंदर हम लोग database को मिला के पूरे जो लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, जो CRUD ऑपरेशंस होते हैं, वो सारे परफॉर्म करते हैं. अभी बहुत सारे लोगों को दोनों चीज़ करनी आती है. So they are called the full stack developers. It's not by completing these basic concepts and declare yourself as a full stack developer or a front end and a back end developer. It's not like that. You need to know how the real projects work. For that, you need to either create your own project. Yeah, whatever the idea you have, you can put it on your project and make a website, or either you can do a clone project. क्लोन प्रोजेक्ट मीन्स दैट जो भी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ये सारे जो भी वेबसाइट्स होते हैं, इन सारे के क्लोन करना, यानी यू आर मेकिंग अ कॉपी ऑफ इट. यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ दोज वेबसाइट्स वर्क. These all comes under clone project. If you do one or two clone projects, that will be very easy. You can understand the concept of how actually your website development works, and at the end you need to learn how to host your website. And by this you are a complete web developer. You know, from front to back. This is the complete basic structure of what to learn in the journey of a web development. I'll put the links in the description for HTML, CSS and JavaScript. Thank you for watching my video. We'll be back.